Yes. So please start your camera. Okay, sir. Sir. Visible, sir. No, not now. Oh, sorry, sorry, sir. Clip cover. Sir. And tell me about yourself, Shrikant. Okay, sir. Uh, so good afternoon, sir. Myself is Shrikant Dabe, and uh, I completed my education from SSBT COT College of Engineering from Mamori, Jalgaon, and later I moved in IT. Uh, I lived in Pune and lived in Pune with my family. Um, uh, I started my career 3.5 years ago in IT, uh, in automation testing. Later, I moved in, practicing or uh, learning in the DevOps. Mm-hmm. Uh, yeah, currently I am working as an automation tester where I test the manual and testing, manual testing and automation testing on the web UI applications and mobile applications. Uh, Mm-hmm. I also learn the um, uh, DevOps concepts like cloud, uh, Docker, Kubernetes, Mhm. uh, Jenkins. These are the automation tools I have learned and also hands-on on it. Uh, yes, sir, that's it for mine. So what services you are aware as far as AWS cloud is concerned? Okay, sir. So yeah, AWS services I have uh, learned and hands-on on that. EC2 instance, S3, uh, S3 and S3. Uh, so you mean core services, sir? Whatever services you understand, you know that you can tell. Yeah, Lambda. Also core services. Yes, sir. EC2, S3, Lambda. Mhm. Sorry, sir, I can't recall. You can. What are the compute services of AWS? Compute services. CPU, storage. Uh, Storage में in storage Hello, that we. one minute, Shrikant. Yes, sir. Screen was disconnected. Yes, sir. Yeah, you can tell me. Yes, sir. Compute services in AWS is CPU. We can, I mean, in EC2 we can compute EC2 storage. Uh, Okay, Shrikant, what are the components of VPC? Components of ECP is subnet. First of all, subnet, private subnet, public subnet, NAT gateway, uh, s- NAT gateway, internet gateway. Hmm. Uh, so that much I can recall. Okay. What is the purpose of Route 53? Route 53 we are used for access to the internet. I mean, we we need an access to be on the internet. I mean, we need internet to be on the internet for our services. So Route 53 we are using for access to the internet.
And Shikant, one more question I will want to ask you. What is yes, CloudFront? sir, CloudFront. Okay, Shrikant. Yes, So we'll stop. But what is my opinion for you? So although you have a knowledge and working experience, yes, but you didn't do interview preparation, if I am not wrong. ओके, जब तक आप इंटरव्यू प्रिपरेशन नहीं करोगे तब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं आएंगे। और जहाँ तक आपका सवाल है, आपको रेगुलर जब आप सेशन होता है तो आप अच्छे आंसर्स देते हो, राइट? यू आस्क मी सम गुड क्वेश्चंस, बट व्हाट हैपेंस टू यू टुडे? ओके, आज कुछ होने का जरूरत तो था नहीं, तो यू शुड एबल टू गिव आंसर्स काफी अच्छे से। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपने टू द मार्क नहीं दिया। ओके, इट डजंट मीन यू डोंट हैव द टेक्निकल नॉलेज और वर्किंग एक्सपीरियंस। आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करने की बहुत जरूरी है ना? yes, sir. और मुझे लगता है इंटरव्यू फियर आप में है, Yes, sir. इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये बहुत Yes, sir. बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी के साथ होती है। जनरली फ्रेशर्स को हम लोग समझ सकते हैं कि दे हैव अ प्रॉब्लम फॉर इंटरव्यू फेसिंग, बट एक्सपीरियंस लोगों को तो होना नहीं चाहिए, राइट? एंड मैं कोई अननोन पर्सन भी नहीं हूँ, राइट? Yes, सो हमारा कांटेक्ट अभी 2-3 महीना हो गया, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करो और दो, है कि नहीं श्रीकांत, है ना? yes, yes, sir. सॉरी, आपका जो प्रिपरेशन है उस लेवल का नहीं है ना? Yes, sir. इसको बुरा मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैंने No, sir. आपको सिर्फ बताया कि व्हाट इट इज। ओनली थिंग इज दैट इंटरव्यू प्रिपरेशन मतलब क्या होता है श्रीकांत, कि आप क्वेश्चन आंसर्स करो। Yes, sir. ओके, जब आप क्वेश्चन आंसर्स करोगे ना, खुद से प्रिपेयर होंगे कि भाई इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या आंसर दूंगा, उस तरह का क्वेश्चन आएगा क्या आंसर दूंगा, तो उस समय पे आपके 100% आंसर्स अच्छे आएंगे। और 2-4 दिन अगर भी प्रैक्टिस करो ना श्रीकांत, तो आप यू विल फील डिफरेंस इन यू, Yes, sir. बराबर है? तो मुझे Yes, लगता है नेक्स्ट 15 डेज में और एक इंटरव्यू सेशन लेंगे, तो एट yes, दैट टाइम देयर शुड बी अ ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट इन यू। yes, sir. क्लियर, है Yes, ना? sir. Yes, अभी अगर बाकी लोगों के इंटरव्यूज भी है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, है ना? yes, sir. क्लियर। Yes, sir. और Clear. एक बात है, किसी का इंटरव्यू खराब गया, किसी का इंटरव्यू अच्छा गया, तो किसी को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है ना? हाँ, sir. ये दिस इज टू एफर्ट टू हेल्प यू ऑल, कि आपका परफॉर्मेंस इंटरव्यू में इंक्रीज हो, राइट? Yes, sir. क्लियर। Yes, sir. Clear. यस श्रीराज, आ जाइए अंदर। श्रीराज पाटिल। यस श्रीराज, प्लीज हैव अ सीट। यस श्रीराज, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। एक मिनट, हाँ। श्रीराज एबल टू एवरीवन? हेलो, हाँ बोलना श्रीराज। Good afternoon, sir. My name is Sriraj Patil. I live in Pune. Completed my graduation being computer engineering. यस एवरीवन, श्रीराज इज ऑडिएबल टू यू? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है फिर। हाँ यस श्रीराज, यू कैन स्टार्ट। Currently, I've completed my graduation being computer engineering from Siagad Institute of Technology and Science, Nare. And I've also completed diploma in computer technology from Sovinita Isavan, Pune. And my schooling from Pandinath Moite English Medium School. फ्रॉम स्कूलिंग फ्रॉम? Pandinath Moite English Medium School वेयर इट इज? in Pune. ओके, सो यू born and brought up in Pune? Yeah. Okay, श्रीराज। Uh, my skills as a computer science student, my skills include C++, Java. Now I'm learning AWS DevOps. My strength is So 1 minute. Your skills is C, C++, Java, yeah, and you wanted to explore your career in DevOps and AWS. Why it is so?
It's, it's now I'm seeing that I'm getting less interview calls and all. So I was facing. So you don't give answers like this. I don't have less interview calls. Yes. So you should have some answer which should justify the thing. क्या आंसर दे पाओगे आप? To work. So basically एक चीज का आंसर दे सकते हो ना. Although in academics we were having a lot of programming languages, so that's why I learn these programming languages. But my interest is in support field, like cloud computing, OS, and DevOps as well. So after my graduation, during the graduation as well, I was simultaneously preparing for these things, and after my graduation I completely devoted to this field. है ना? इस तरह का आंसर आप दे दो तो सामने वाला भी सेटिस्फाई हो जाता है ना? Tell me what are the core services of DevOps? DevOps, AWS. AWS basically are EC2, Lambda, VPC, SNS, SQS, CloudFront, CloudFormation, EKS, ECS. Okay. What exactly the CloudFront is? CloudFront basically means it is like an elastic meeting. It is like a cache which sit in front of an application. Means whenever any request is sent, it directly does not get communicate with a server. Basically, it's communicate with CloudFront. Means fire. What exactly it names? The name is CDN, Content Delivery Network. So AWS Content Delivery Network is CloudFront. What are private content delivery network? Any names? Okay. What are the components of VPC? VPC, subnet, NAT gateway, NACLs, internet gateway, routing table, I think route 53. Yeah. What is the difference between NACL, NACL, and it is a NACL, not NACL, it is a NACL and security group? Yeah. NACL basically, it is a firewall for an subnet level. Yes. And security group? Security it is a firewall for an EC2, means which prevents it controls the traffic. Suppose you need to configure NACL as well as security group. How you will configure? Means, I will add NACL in a security group. Subnet. What is EBS? EBS is elastic block storage, which is basically attached to an EC2 instance. So EBS can be attached to the single EC2 instance, and which can be manually controlled.
is a global. Can EBS volume can connect it to multiple EC2 instance? Are you sure? What is difference between EBS and EFS? EFS basically attached to means it is a file. It is like a share folder which can be attached to multiple servers at a time, and which is which is scalable, which is also auto scalable. What is mean by availability zone? Availability zone is basically an isolated data center is for a region. Okay. How many availability zones is available in a single region? It depends upon the region. For Mumbai region, there are 3. US, there are 5. In US, you have only one region? No, there are many regions in US. Okay, I then don't know. I think there are 3 or 4 regions. okay. What is Elastic Glacier used for, or Amazon Glacier used for? It is an archival storage use. It is an archival storage which is assigned to an EC2 instance, which is less required, which is low cost and which does not require frequently. So we can assign an Amazon Glacier storage. Okay. What is AWS shared responsibility model? Means it is an storage type that can Shared responsibility model. It is not a storage type. What is meaning by start and stop? Start, terminate, and stopping the instance. What is the difference between them? means EC2 while we start EC2 instance, the server gets starts, so we can operate on it. And when we stop the EC2 instance, means it is freeze for freeze at that time, so we cannot work on it. Suppose today I stop the EC2 instance and after 2 hours I start the EC2 instance. Yeah. What change you will find in the instance? ये मैंने बंद किया थोड़ी देर बाद चालू किया might be after 1 or 2 hours. So what will happen? The entire process means what I've done, it would be means gone. I need to do it from start, like SSH login and all. Siddharaj. So what are the load balancers? Application load balancer, network load balancer, and gateway load balancer. एक मिनट है. Hello. Okay. What is the difference between them? Application load balancer basically. So how many you told me? 3. Which one? Application load balancer, network load balancer, and gateway load balancer. Okay. Is there any one more? Yeah, is there is also Classic load balancer. Classic load balancer, which is an old. It's not used. Okay. Okay, Sriraj. Any question for me? Any feedback? Was my Feedback तो मैं दूंगा तुमको है ना. That is mandatory. Apart from feedback. What do you think was what I need? It's what I need to improve. So basically you need interview preparation. जो आप लोग करते नहीं हो. इतना बार मैंने बताया आपको. Interview preparation आप करो.
है ना। Yes. जब तक इंटरव्यू प्रिपरेशन नहीं करोगे तब तक आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ऑल्दो यू थिंक कि आई एम एबल टू कॉन्फ़िगर सो मेनी सर्विसेज, राइट, मैं ये चीज कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, वो चीज कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, ऑल्दो यू नो द आंसर्स ऑफ सम क्वेश्चंस। जो मैंने क्वेश्चन पूछे ये तो रेगुलर ही हम लोग बातें करते हैं, कुछ अलग से पूछा क्या नहीं, बट योर आंसर्स वाज नॉट अप्रोप्रिएट, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल आपने नहीं बताया। ओके, नैकल और इसका NaCl बोलते हैं उसको, नैकल नहीं बोलते, और सिक्योरिटी ग्रुप, इसका डिफरेंस आपने नहीं बताया, है ना। तो कैसे चलेगा। ग्लेशियर क्या होता है वो आपने नहीं बता पाए। स्टोरेज क्लास है ग्लेशियर, Storage class है। फिर आपने क्यों EC2 इंस्टेंस को अटैच करते हो बोला है। Oh, sorry. ओके, CDN आप नहीं बता पाए, तो इसका मतलब ये जरूर ये नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है, यू हैव द नॉलेज, राइट, बट यू रिक्वायर रेगुलर इंटरव्यू प्रिपरेशन, है ना। मैं तो आपको सभी को बोलता हूँ, जैसे श्रीकांत भी, श्रीकांत है कि नहीं गया, श्रीकांत है, श्रीकांत बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, दिस इज द रियलिटी टेस्ट वी आर डूइंग फॉर अवरसेल्फ। जब हम लोग एक्चुअल इंटरव्यू में जाएंगे तो योर परफॉर्मेंस शुड बी वेरी गुड। ये तब पॉसिबल है जब आप इंटरव्यू प्रिपरेशन करोगे। कैसा करोगे इंटरव्यू प्रिपरेशन, गूगल पे जाने का, क्वेश्चन आंसर देखने का, और उसको रोज पढ़ने का। अगर आपका ग्रुप है, जब भी आपको समय मिले अपार्ट फ्रॉम क्लास, आप लो ना एक दूसरे का इंटरव्यू, क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करो ना। ओके, दैट विल हेल्प यू अलॉट। और वो जब तक नहीं करोगे तब तक आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते बॉस। हो सकते हो क्या, नहीं, तब तक आप में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। क्लियर, Yes. आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट आफ्टर 15 days यू विल हैव वन मोर राउंड ऑफ इंटरव्यू। उस समय पे आप, मैं चाहता हूँ कि आप ड्रास्टिक करो। अभी मैंने ज्यादा समय का लिया नहीं, क्योंकि आप यू आर नॉट एबल टू गिव आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन। तो जब क्वेश्चन आंसर्स करोगे तो होगा क्या, इंटरव्यू का ड्यूरेशन भी बढ़ेगा। जब कभी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो और कोई लेता है आधा घंटा पौन घंटा इंटरव्यू, या 1 घंटे तक ले जाता है, तो देयर आर चांसेस दैट यू आर गेटिंग सिलेक्टेड। और जल्दी वो आपको भगा देता है, इसका मतलब है यू ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। ओके, ओके, Yes. ठीक है, थैंक यू। कौन देगा अभी, हु इज इंटरेस्टेड टू अपीयर नेक्स्ट। यस, तुषार, करण, तुषार, इंटरव्यू देना है। यस तुषार, Yes, sir. ओके, प्लीज स्टार्ट योर कैमरा देन। आपका कैमरा स्टार्ट करो। एक मिनट हाँ। हाँ चलेगा। यस तुषार, Good morning, टेल। good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून तुषार, कैसे हो आप। I'm fine. ओके, टेल मी योर अबाउट योरसेल्फ। Uh, Sir, I am Tushar Kamble. I have completed my BE in Computer Engineering from Siagan Institutes. Currently, I'm working in Tech Mahindra as a associate software engineer in cloud infrastructure, having 2 years of ओके, experience in this field. ग्रेट तुषार। सो व्हाट्स योर डे टू डे एक्टिविटीज यू Means परफॉर्म। we means I'm currently in a monitoring role wherein I monitor servers, and also we are having a little bit of access towards networking, and we are performing right now L1 level tasks. And one level task. So which many monitoring tools you use. We are using SolarWinds and Pingdom. Solar winds and Pingdom for monitoring URLs.
So these are both free or these are paid? These ones are paid. Okay. So what things you monitor, Tushar? Means on-premises servers, on-premises servers, and also the net, what to say, ISPs and core switches, access switches related to networking on the tool. Okay. So basically, you are working from last 2 years. Can you tell Yes. me one incident? So basically, while troubleshooting that incident, you feel yourself proud. That means you enjoy that troubleshooting that incident. Any incident which you perform in last 2 years, Tushar? You getting my question or not? Yes, but ऐसा कोई इंसिडेंट जो ट्रबल शूट करते करते समय आपको अच्छा लगा, राइट? या यू लर्न समथिंग फ्रॉम दैट? एनीवन? sir what means in one tasks that are not major major roles or tasks which we perform. We just perform like CPU memory cleanups and VPN tunnel which are down. We just what do you say? We just do the L1 level I know you are L1 level doing L1 checkups. level L1 level challenges. You are facing L1 level challenges. But what I am asking you, any issue, okay, which takes time to solve, है ना, जो आपको solve करने में समय लगा, okay, या you have a predefined script, कुछ तो रहा होगा ना, something you face challenging issue in last 2 years while solving your tickets. No, sir. Usually go for technical team to resolve the issues. Means most of the issues are resolved by technical team. So you are not from the technical team, Tushar? No. Okay, ठीक है. But suppose you are saying 2 years or 3 years experience, you can expect a question like this, right? और उसके लिए क्या रहना पड़ेगा? आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा. Clear, Tushar? Okay, sir. Okay. Yes, Tushar, tell me what is AWS Cloud? Sir, AWS Cloud is a public cloud that offers server cloud services over internet. Mm-hmm. Then it has a computing services like storage, network, database. Then it Storage is a offers compute services? Storage is a compute offers service? no, it offers services, It offers for services, different है ना? services. Storage is not a compute services, right? Okay. It Any is more? it offers users to pay as you go Mm-hmm. model. Then AWS has a larger stake compared to other clouds. Okay. How much stake does it have right now? It is having 34%. 34% market share, right? Yes. What is Lambda, Tushar? Sir, Lambda is Pioneer serverless. So basically, in Lambda, we create functions. Means whenever some event occurs, at that time Mhm. this Lambda will trigger. The For Lambda, the instances are charged on whatever the time we use. Pardon, what you say? Last sentence. Means for lambda means whenever the lambda gets means it gets run, for that only we pay. Yes, you pay for Lambda when it will get be execute the Lambda.
For that duration, you pay. Okay. Any real use case of Lambda? Any practical for Lambda? For what exactly purpose you use Lambda? For example, if there is a means if there is means if we have created one bucket in which if we have put some if we have uploaded some image and we have created some we have created one Lambda function in which suppose we want to move that image into another bucket. At that time we can use this Lambda function for to move the image to another bucket. Okay. So what is EC2 pricing options, Tushar? EC2 pricing options, we have on demand, then reserved instance, then spot instance, then we have a dedicated. Dedicated host, right? Yes. Okay. What you understand about spot instance? Means for spot instance means these are unused AWS resources. Means unused AWS resources. For in this we get 90% of it is a 90% cheap. It is Then 90% cheap. yes. And in this the AWS can AWS can take away the resources anytime. Okay. Yes. What is the use of SNS? Sir, SNS is a simple notification service. So basically, it is a part of cloud event. So cloud event notification. So basically, in this it will it is a publisher subscriber model. In which we can send in which whenever an event triggers, it will send a notification to the user via email, phone, and other things. At a time, can I send notification to multiple subscribers? Yes. Okay. Any thing you know about database? Yes, sir. Sir, database is a collection. Database is a way to store the data in the form of rows and tables. Sorry, rows and In columns. AWS, what type of database you have? We have RDS and NoSQL. Any example of NoSQL? AWS Word document, MongoDB, AWS? Word document, Okay. And MongoDB. MongoDB, What is document DB? document DB. Means document DB is NoSQL, wherein data is stored in an unstructured way. Okay. Tushar, any question for me? आपको कोई क्वेश्चन पूछना है मुझे? No, sir. Okay. Yes, Tushar, your preparation is good, but I will like to suggest you आपको थोड़ा सा और प्रिपरेशन करने की जरूरत है ना? स्पेसिफिकली इंटरव्यू प्रिपरेशंस. क्लियर? Okay, sir. ओके. आपका इंटरव्यू तो ठीक था, बट थोड़ा सा और अच्छे से प्रिपेयर करने की जरूरत है. और थोड़ा सा आई कांटेक्ट रखो आप.
Okay, sir. जब आंसर्स देते हो ना तो यू नीड टू गिव आई कांटेक्ट विथ इंटरव्यूअर, राइट? Okay, sir. मतलब आप आंसर देते समय इधर उधर सोच के बताओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो बेसिकली इंटरव्यू में हम लोग क्या है, इट्स डिस्कशन. जब डिस्कशन करते हो तो आप आंखें दूसरी तरफ थोड़ी करते हो, है ना? सो यू नीड टू हैव आई कांटेक्ट. क्लियर तुषार? Okay, sir. I will improve on that. ओके. या Thank you, sir. या यस अक्षय, अक्षय जोशी. यस अक्षय. Yes, yes, Akshay. Tell me about yourself. Sir, myself Akshay Joshi. I'm basically from Amravati, and I have an experience of 8+ years in IT industry for the end user support Mm-hmm. and data center support. Mm-hmm. I'm in hardware field, and currently I'm learning the cloud technology to upgrade my knowledge. Okay, so what's your day-to-day issue you face, Akshay? Actually, in our organization, I am responsible for support. If they are facing any kind of technical issues, software related issues, or network related issues, or hardware related issues, we can support them. They log the ticket in ServiceNow ticketing tool. After that, that ticket assigned to some engineer, and after that, we provide them remote support as well as the on-site support. So you provide on-site support? Yes, Okay. So what level of issues you face? L2 or L1, L3? L1 and L1 and L2. yes. Okay. So what is your experience with AWS cloud? Currently, I am in learning phase. Okay, so basic things I know, and because our organization is planning to migrate our on-premises servers to the cloud. Okay. So how many servers you have right now? In our organization, we have email server, storage server, NetApp we are using, and local server for data storage and that thing. Okay. So what database we use in data storage we use in AWS? Storage. Okay. What is instance store? Instances we create Instance store. Instance store. Instance store. instance store. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes. Instance store is one concept in AWS. So are you aware about that? I have an idea, but not implemented. Okay. So what is Elastic Cache used for? Elastic It's Cache. cache memory. Okay. Where what's it doing? Okay. I have a practical hands-on, but a theoretical I am not that much strong. What are AWS, storage classes? Storage classes, Nice. S3 storage classes. In S3, we can store the objects, data files, so that we can
access them from remote. That's okay, but I'm asking you, what are the storage classes? Noise. Anything about S3 lifecycle policy? What is static IP in AWS EC2? Static IP. AWS Where, not only AWS EC2, anywhere you can use static IP. 192.168.0.1 we generally use. I mean, I'm asking you, what is static IP? Elastic IP? Elastic IP is the dynamic IP that will change. What are components of VPC? What is elastic bin stock? What is meaning of scaling? Scaling is two type of scaling, horizontal and vertical scaling in EC2 instances. Okay. Are you able to perform scaling manually? Yes, we can. How? If there is load on one server, okay, then if we have to increase the servers, okay, at that time we can do the load balancing for that server. If, for example, on one server there is a load of 60% for example, and for second server we set the 80. If load on one server. What are scaling policies? Two types of scaling generally we discuss. What are those? Horizontal and vertical. So what is difference between horizontal and vertical scaling? Vertical scaling increase the physical setup, and horizontal in terms of memory, storage, and RAM. Okay, Akshay. Do you want to ask any question to me? Sir, is there any improvement? Should I? Yes, a lot of improvement is required because you do, although you are saying you have an experience. So accordingly, I don't feel any technical knowledge. Okay. I don't know about your current profile, Right. but AWS knowledge is very less, I will say. Okay. Might be you didn't get time to do preparation. The things. Yes, but you need to tackle this issue. And आपको क्या करना पड़ेगा? टेक्निकल नॉलेज अच्छा लेना पड़ेगा. ओके, इसके लिए मैंने बताया था आपको. You need to do the interview preparation. Right. Whatever level you have, है ना? जब तक आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तब तक आप you cannot crack interview. Okay. Sir, I have practical knowledge on premises, but But you are upgrading. You are upgrading to Yes. AWS DevOps. yes. So this is a different subject, right? Definitely on premises things can be migrated on AWS. Right, sir. But suppose you are going for an interview on AWS and DevOps, so he will ask questions on the basis of AWS and DevOps. Right. ओके, वो अभी के करंटली स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं पूछेगा ना. ओके, तो आपको वो प्रिपरेशन. I have to cope with the things. यस, इट इज नॉट डिफिकल्ट. थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, टाइम मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, बट यस यू नीड टू डू लॉट ऑफ प्रिपरेशन. Yes.
ठीक है, Thank you so much. तो शिवराम को भेजिए। यस शिवराम। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। Yeah. Thank you for giving me chance to introduce myself. My name is Shivram Durkar. Basically, I'm from Parayojnath and currently living in Pune. And I have completed BSc and followed by Masters in Computer Management. And apart from that, I like to use whiteboarding. And I love traveling in trains, especially in trains. Yeah, that's it. Any project you perform in AWS? Yes, I performed 2 projects. Okay. Yes. The first one is static website using ES3. Yes. Second one is launching server on EC2. Launching? Server like website on EC2. But can we say these are the projects? Because interview only specified to AWS. But they are very simple. Just you create EC2, you create template on website template on EC2. It's a very basic. Yes. So whenever you are saying that you perform some projects, so it should be something bigger, na? So I should have some question I can ask on the basis of that. Suppose you are putting website on S3, static website. What do you need to do? Create website, enable that setting, public access दे दो, हो गया website okay, वो तो बच्चों का खेल हो गया ना. Okay, although there are list of projects we have, but आपको ऐसा कोई प्रोजेक्ट बताना पड़ेगा जिससे आपका नॉलेज एक्सप्लोर हो. Okay, interviewer should able to ask some questions on that basis of that. जो हमने क्वेश्चन प्रोजेक्ट आपको दिया था, वो प्रोजेक्ट हमने क्यों नहीं बताया? I am giving specified like AWS services. Oh, whatever the services we use, okay, these are the AWS services, है कि नहीं? वो प्रोजेक्ट आपको इसीलिए तो लिया था ना. उसमें क्या आता है आपका? EC2 आता है, ऑटो स्केलिंग आता है, स्केलिंग पॉलिसीज आता है, आपका क्या आता है? EC2 भी आ जाता है उसमें, लोड बैलेंसर आ जाता है ना, स्केलिंग पॉलिसीज आता है, रूट 53 आता है. DNS हाँ DNS हाँ, रूट 53 आता है. अगर आप डेटाबेस ऐड करना चाहते हो, डेटाबेस ऐड कर सकते हो, आप इलास्टिक कैश भी ऐड कर सकते हो सपोज. feeding up source. ओके, तो इसमें बहुत सारा चीजें इंक्लूड होता है ना. तो मैंने तो आपको बताया था कि यू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट ऑफ दैट प्रोजेक्ट एज वेल, ठीक है नहीं? Okay. तो आप अगर करोगे तो अच्छा है. या यू नीड टू प्रेजेंट द प्रोजेक्ट समवॉट बिगर. जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, तो ही ऑल्सो नोज दैट यू आर अ फ्रेशर. Okay. Although you are saying I have 2 years experience, 3 year experience, लेकिन सामने वाला बेवकूफ बैठा नहीं है, उसको समझ में आता है कि आप कहाँ पे हो, राइट? तो आपको कुछ ऐसा तो थोड़ा सा बड़ा बताना पड़ेगा ना, या इक्विवेलेंट टू दिस, राइट? या वो भी हम लोग बोल सकते हैं कि S3 नोटिफिकेशन SNS को जाएगा, SNS SQS को जाएगा, और उसमें भी थोड़ा सा कुछ एडिशन हम लोग करके देंगे. तो दैट कैन बी अ प्रोजेक्ट एज वेल, बिकॉज यू आर शोइंग नियर अबाउट 2, 3 or 4 year ऑफ एक्सपीरियंस, राइट? एंड डोंट नो व्हाट अबाउट यू, बट आपको थोड़ा सा बड़ा चीज बताना पड़ेगा, है ना? So what are the storage we use in AWS? Storage. For storage, I use S3. S3. Yes. Only S3 or anything else? I am asking you storage we use in AWS. Different storage. Databases. You can, database is one of the thing. I use 2 types of databases like. No, I'm not asking you what you use. I'm asking you what are the storage mechanisms available in AWS. For storage you have in AWS.
And mainly use S3 for the storage. सिर्फ S3 है आपके पास? EBS है आपके पास? EFS है आपके पास? S3 है आपके पास? क्या है? डेटाबेसेस है कि नहीं? ओके, इलास्टिक कैश है। तो देयर आर डिफरेंट डेटा स्टोरेज यू हैव टू यूज, और उनका हर एक का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है ना? Now tell me about EFS and FSS. What is the difference between EFS and FSX? EFS or FSX? What is EBS multi-attach? EBS is like kind of volume for EC2, and we can attach to like running the systems or running server. No, that you may understand. EBS is elastic block storage. Yes. Okay, normally what we do, hard disk connected to EC2 instance is a elastic block storage. But I am asking you EBS multi-attach. We can attach multiple EBS to single server or So can we assign a single EBS volume to multiple EC2 instance? yes, we can ask. How? We need to create first a snapshot of that EBS. So after that we can attach same volume to other EC2. No, suppose you create a snapshot and through the snapshot you are creating new volume. So it's basically a different volume, no? Okay. Okay, तो दूसरा वॉल्यूम आप दूसरे इंस्टेंस को अटैच कर सकते हो, राइट? Yes. So definitely you can take a snapshot. What I'm asking you, single EBS volume, I wanted to attach to multiple EC2 instance. Can we do that? Yes. कैसे करेंगे? Can use the same endpoint of the EBS. नहीं पता है तो आप थोड़ा पढ़ के रखिए। ओके, EFS एंड FSX के बीच में डिफरेंस क्या है? File system. I can't recall it. It's the wrong form of text in the place of. If you wanted to optimize cost in AWS, Okay. क्या करना पड़ेगा? Yeah, for cost optimize, we have a lot of options. Like we can use serverless computing. Okay. We can set up scaling. Okay. We can use Anything about EC2? सबसे ज्यादा कॉस्ट तो EC2 का ही लगता है। yeah, we can use T2. देखो T2 आप बोलोगे, T3 बोलोगे, राइट? T3.micro, T3.large, but it depends on the configuration required, right? ओके, तो मेरा रिक्वायरमेंट अगर मेरा 16 GB रैम चाहिए या 32 GB रैम चाहिए तो आई कैन चूज एनी ऑफ द सर्वर्स, राइट? T3 है, T4 है, कुछ भी ले सकता हूँ, बिकॉज आई नीड दैट कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर मुझे 32 GB रैम चाहिए तो मैं T2.micro तो नहीं ले सकता ना, नहीं ले सकता, राइट? सो दिस आंसर डजंट जस्टिफाई कि T3 और T4। तो अगर कॉस्ट ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको क्या क्या यूज करना पड़ेगा? Like we can firstly configure scaling for traffic. Like if I have traffic on only Sunday, so I need. ठीक है, that is a part of scaling. क्या आप रिजर्व इंस्टेंस नहीं यूज कर सकते हो? Yes, we can use. So we can save cost in reserve instance. अब यूज केस रिजर्व इंस्टेंस का है तो यूज कर सकते हैं। अगर आप स्पॉट इंस्टेंस यूज कर सकते हो, नॉन क्रिटिकल वर्कलोड है तो वहां पे आप पैसा बचा सकते हो। But I think we need to first request on AWS for स्पॉट इंस्टेंस के लिए क्यों रिक्वेस्ट करना पड़ता है? वो तो डायरेक्टली मिल जाता है ना। okay. स्पॉट इंस्टेंस के लिए कुछ रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता है ना। सो ऑल्दो इट इज ऑन द बिडिंग प्रोसेस, आप थोड़ा सा हायर अमाउंट कोड करो तो आपको मिल जाएगा स्पॉट इंस्टेंस। एंड
यू कैन ट्राई फॉर क्रिएटिंग स्पॉट इंस्टेंस, Okay. है ना। वो उसका बिहेवियर कैसा है, हमने ट्राई करके देखा कि कभी स्पॉट इंस्टेंस नहीं देखा। वाई? हमारे बजट में तो है 90% तक डिस्काउंट मिलता है। ओके, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिवोक ही होगा ना। लेकिन हमने ट्राई करके देखा क्या, नहीं देखा। क्यों नहीं देखा, देखना चाहिए था, है ना। तो जब हम लोग किसी फील्ड में हमारा करियर बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ना उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। Okay. ओके, तो जब आप इन्वॉल्व होंगे ना तो डेफिनेटली सम क्वेश्चन विल रेज, एंड उस क्वेश्चन के आंसर जब हम लोग फाइंड करोगे तो हमको प्रिपरेशन भी हमारा हो जाए, है ना। स्पॉट इंस्टेंस डेफिनेटली यू कैन ट्राई। उसके अलावा You can monitor like if there is suppose you have answer of this question, तो आप as far as EC2 instance is concerned, okay, so you need to choose a specific instance type, राइट। दूसरा है आपका रिजर्व इंस्टेंस आप यूज कर सकते हो। तीसरा, नॉन क्रिटिकल वर्कलोड के लिए आप स्क्वाड इंस्टेंस यूज कर सकते हो, राइट। चौथा, आप स्केलिंग यूज कर सकते हो जो आपने ऑलरेडी बताया। कॉस्ट एक्सप्लोरर यूज कर सकते हो, yes. राइट, स्क्वाड एक्सप्लोरर। और ट्रस्टेड एज एडवाइजर आप यूज कर सकते हो, है ना। तो AWS विल एडवाइज समथिंग सो दैट you can optimize cost. Okay. Clear? Okay. And we can also monitor on regular basis. Obviously you need to do monitoring. Without monitoring we are handicapped, है ना। मॉनिटरिंग तो हमको करना ही पड़ेगा। विदाउट मॉनिटरिंग चल सकता है क्या, नहीं चल सकता। ओके, व्हाट इज डायरेक्ट कनेक्ट? It's on based on video. We can connect three systems via direct. What is direct connect? Basically I'm asking. We can access EC2 like any other like any specific service using GUI. Direct connect. Any idea about VPN? Yes, with What it is? virtual network. It is related to direct connect. I don't know anything like direct connect like specifically, but I आप know VPS पढ़े? Huh? VPC पढ़े आप? VTC. Yes. So direct connect is a component of VPC. I know the VPN. Okay, tell me the concept of VPN. So it's create like one transfer to server and user. It's create intermediate what we call you can't recall that specific word. Basically, a remote user can connect to the organization using VPN. It creates a secure tunnel. Yes, secure the क्या होता है? Secure tunnel. Although remote user at the remote places, but virtually it becomes a part of your corporate network. It gives IP address from your production environment, means corporate network. So that is what VPN है ना। तो VPN दो तरह के होते हैं, एक है client to site, दूसरा है site to site. Client to site means single user can connect to the organization, and site to site means a branch office can connect to the this or corporate office. it hide our address. It hide our address, IP address like that. हाइड थोड़ा सा नेट गेटवे करता है, ओके। VPN में वो चीज बरतने की जरूरत नहीं है, ओके। इंटरनली ऑल्दो इट मे क्रिएट हाइडिंग योर IP, लेकिन उसका पर्पस अलग है। और उसी में आपके पास क्या आता है, डायरेक्ट कनेक्ट जो आता है, इट्स फिजिकल लिंक। नॉर्मली VPN क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होता है। लेकिन अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, क्लाउड सर्विसेज हम लोग यूज करते हैं, एट दैट टाइम वी कैन यूज डायरेक्ट कनेक्ट। दैट मीन्स अ फिजिकल लिंक विल बी एस्टेब्लिश बिटवीन AWS premises and your organization, ओके। तो उस लिंक को कौन यूज कर पाएगा, हम लोग। इसको क्या बोलते हैं, लीज लाइन। क्या बोलते हैं, लीज लाइन, है ना।
What is S3 storage classes? Yeah, we can store data in different types. Like we use storage classes for different types of data. Which data? Okay, Shivram, any question for me? If I selected what is my roles and responsibility. If I selected what is my roles and responsibility. No, you will not be selected with this preparation. Okay, don't take it a casual way, right? Yes. Although I'm your trainer, but this interview you need to think it's an actual interview. Mock interview किसलिए लेते हैं हम लोग कि your preparation for actual interview आप ready हो, राइट? अगर उसको आप सीरियसली नहीं लोगे तो फिर ये जो सिचुएशन है, अगर आज आप रिजेक्ट भी हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बट वेन एवर यू आर गोइंग फॉर एक्चुअल इंटरव्यू, ओके, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, राइट? और मुझे क्या लगता है शिवराम, once again I will say some same thing, इंटरव्यू प्रिपरेशन, Okay. ओके, जब तक आप इंटरव्यू प्रिपरेशन नहीं करोगे ना तब तक आप अच्छी जगह पे सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। मैं आपको बहुत सारे लोगों का एग्जांपल दे सकता हूँ, है ना। लोग देखिए क्या है, जरूरी है कि उनको बहुत टेक्निकल नॉलेज होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। जो अच्छे कंपनी में सिलेक्ट होते हैं ना उनको बहुत अच्छा टेक्निकल नॉलेज होता है, जरूरी नहीं है। सिंपल क्या है, कम्युनिकेशन स्किल, और वो जो क्वेश्चन पूछते हैं उन क्वेश्चन का सही से आंसर। मुझे लगता है आपने बहुत कैजुअली लिया है इसको। What I feel, might be I am wrong, मैं कुछ गॉड थोड़ी हूँ कि मैं Ready for interview. ओके, व्हाई नॉट फॉर रेडी फॉर इंटरव्यू। अगर ये क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको बताया था 3-4 दिन पहले, ओके, अगर बताया नहीं भी होता तो भी आपने अच्छा इंटरव्यू देना चाहिए था। आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ पूछा क्या? नहीं पूछा, बेसिक चीजें पूछी, लेकिन आपको बेसिक चीजें ही नहीं आती है। अगर हमको नहीं आती है तो हम लोगों को इंटरव्यू में कोई सिलेक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा, है ना। और ये बात ध्यान में रखो, है ना। मैंने देखा है एवरेज पीपल्स कैन क्रैक इंटरव्यू बिकॉज दे डू हार्ड वर्क। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बताइए आप? 10, 15, 20 सभी सर्विसेज आप कॉन्फ़िगर करो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन नहीं करोगे ना, तब तक आप कहीं किसी भी कंपनी में सेलेक्ट नहीं होते हो। ऐसा भी नहीं है कि आप में पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल है, लेकिन हम लोग उसको एक्सप्लोर नहीं करते, करना पड़ेगा। Yes, sir. Very good. क्योंकि यू आर ऑन सच अ स्टेज कि अगर आज आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यू आर रेडी टू वर्क देयर। तो फिर हम लोग कैजुअल के लिए क्यों ले? बाकी चीजों को कैजुअल लिया तो चलेगा, इस चीज को कैजुअल नहीं लिया जा सकता। ठीक है शिवराम, ऑल द बेस्ट। यश, करण, 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 कैन बी स्टार्ट? Yes, sir. ओके, प्लीज स्टार्ट योर कैमरा। It is visible. Yes, you are visible. Yes, tell me about yourself, Karan. Yes, sir. My name is Karan Sunil Kaure. I completed my Bachelor's of Engineering from MIT Institute of Nasik, and Mm-hmm. I have in Information Technology, and also I have honors in Cybersecurity. I am proficient in languages such as C++, Python, and familiar with various languages like SQL and uh, R and HTML, CSS. I have not working, but I have made some projects on Django Python framework, and also I am familiar and I have home working experience, hands-on experience of AWS and GCP. Okay. So, how long you are working on AWS then? I have been working since 2 months. I have made some projects also. Yes, you made some projects. Yes, sir. I have created a VPC and I have Mhm. also created subnets for it. Also attached root tables and internet gateways, NAT gateways, and also created EC2s. And So basically, you are able to create VPC, right, Karan? yes, sir.
Okay, so you say this is a project. And also, I have made auto balancers. Okay, so can you explain me your project, Karan? Which sir, AWS or Django Whatever one? project you no, Django is not our topic, right? Okay. Uh, want a project on AWS, whatever you work on. Okay. So first of all, I created a VPC. I attach internet gateway to it so that it can access internet. Mm-hmm. Then I created two subnets. One was public and one was private. On Mm-hmm. both and no, in public I created one EC2, and in private I created one EC2 instance. So then what I did, I did VPC. Then I created NAT in a public subnet so that the private Mm-hmm. EC2 can access internet through it. Okay. Any configuration you do in root table? Yes, sir. Root table I attached to internet gateway to the public one and NAT Mm-hmm. gateway to the public one. So basically, I think you created two root table, right? Yes, sir. One for private too. One is private, one is public, right? Public root table. Can you Yes. create a single root table? No, sir, we can, but I think we need two root tables because root tables define how and what are connected to the subnets. Pardon, I didn't understand. So, sir, I don't recall it. तो बोलिए ना. Sir, I don't recall. I'm a bit confused. Okay. As per as EBS, what are the types of EBS you have? EBS stands for Elastic Block Storage, and Hmm? EBS. So I don't recall. I know about S3 types, but uh, What is cloud computing and especially AWS? AWS is uh, a website that provides you various cloud operations such as cloud computing, cloud storage, databases, and EC2 instances are sort of virtual machines which user can create. It is a computing service provided by AWS. Okay. Anything about auto scaling? Do you know about auto scaling? Yes, sir. So what happens? Let's say we have a website, uh, and let's say if we first configure the scaling policy. Let's say if CPU utilization is more than 50%, then what we can it will automatically create one instance so that it can be balanced. And all of this happens with the help of load balancer. Okay. What are different scaling policy we use in auto scaling? Step scaling policy and predictive scaling. Okay. Uh, so इसमें आता मतलब I remember. ठीक है. What are different databases we can create in RDS? Oracle or Mm-hmm. AWS Aurora, MariaDB, PostgreSQL, PostgreSQL. Okay. What is the advantages of Aurora? Aurora is developed and created by AWS, so it is uh, five times performance effective and faster than PostgreSQL. Okay. It is faster and efficient than Postgres. It is for. Okay. Any idea about instance store?
by instance store, do you mean where we can create instances like fair Windows Server or Linux one? No. What is instance store? Sir, can you elaborate? I don't get what you're trying to ask. I am asking you about instance store. Instance store. Okay, AMIs? No, not AMI. Okay, how you create AMI? Can you create AMI? Yes, sir. How? So, sir, I don't recall. I know, but I'm not able to recall at the moment. Suppose you have a EC2 instance with you and you wanted to check CPU configuration. What command you have? No, sir, I don't recall. Okay. Suppose you wanted to check disk information, then LSBLK. hmm? LS. LSBLK. BLK. Okay. Okay, Karan. Do you want to ask any question to me? No, sir. Okay, Karan. All the best. Uh, चलो. सर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मुझे ऑलमोस्ट पता है सारे, बट आई एम नॉट एबल टू आंसर। Why? तो वही मुझे आपसे टिप्स चाहिए थी कि अभी आई एम फ्रेशर राइट नाउ कि मैंने ज्यादा इंटरव्यू दिए नहीं है। ऑल्दो ठीक है, नहीं दिए तो आपने इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। मैं कितने दिन से बोल रहा हूँ कि आप लोगों को इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है। व्हाट इज मीनिंग बाय इंटरव्यू प्रिपरेशन, है ना? हम लोग पढ़ते तो है, हम लोग सर्विसेज कॉन्फ़िगर करते हैं, बट क्या आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया? यू वांटेड टू टेल अबाउट बीपीसी अ फुल प्रोजेक्ट, क्या ईच एंड एवरी डिटेल आप बता पाए? नहीं बता पाए। नहीं। उस तरह का स्टडी आपने नहीं किया। ओके। और मैंने जो क्वेश्चन पूछे उस क्वेश्चन के लिए आपने प्रिपरेशन किया क्या? कि अगर मुझे इस तरह का क्वेश्चन आया, इंस्टेंस स्टोर है, तो उसका आंसर क्या होता है? अगर आप गूगल पे जाओगे, चैट जीपीटी जाओगे, ढेर सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर्स का। हमने उस तरह से प्रिपरेशन किया क्या, करण? आई थिंक मैं एक्चुअली नर्वस हो जाता तो ब्लैंक ही हो क्यों? जाता हूँ। मुझे लगा वही आप किसी अपने अपने दोस्त क्योंकि से मिलने जाते हो तो नहीं नहीं, सुनो मेरी बात। आप किसी हम्म, दोस्त से मिलने जाते हो तो नर्वस होते हो क्या? नहीं। जब देखिए इंटरव्यूअर है, तो इंटरव्यूअर हम्म, किस लिए बैठा है? आपको सिलेक्ट करने के लिए, आपको रिजेक्ट करने के लिए बैठा है क्या? नहीं। जैसे अगर मेरा अगर अपना कंपनी है एंड यू आई वांट सम पीपल्स टू गेट सिलेक्टेड और मुझे इंटरव्यू लेना है, तो मैं रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठा हूँ। यू नीड टू अंडरस्टैंड, हम्म, आई एम हियर टू सिलेक्ट यू, राइट? तो मुझे बंदे में कैलिबर दिखेगा तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, और मैं भी चाहता हूँ कि लोग सिलेक्ट हो, मेरा हेडेक कम हो ज्यादा से ज्यादा हम्म, इंटरव्यू लेने का। तो जो इंटरव्यू फियर है ना, वो हमको निकालना पड़ेगा। एक इंसान हाँ, दूसरे इंसान से बात कर रहा है बस, बॉस, है ना? तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये चीज हर एक के साथ होती है, लेकिन इस चीज को कभी ना कभी तो ओवरकम करना पड़ेगा ना, और वो तभी होता है जब इंटरव्यू प्रिपरेशन आप करोगे। इंटरव्यू प्रिपरेशन मतलब क्वेश्चन आंसर, जो जो इंटरव्यू में पूछा जाता है उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहो। हम्म, आप इतना प्रैक्टिस करो कि अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो उसका सही सही आंसर आप दो। ये जब तक नहीं करोगे तब तक आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्लियर? यस सर। क्योंकि ओके। वही होता है कि मुझे ऑल्दो पता है बहुत सारी चीजें, पर वो ब्लैंक ही हो जा रहा हाँ, ये हर एक के साथ होता है ना, ये आपके साथ हूँ। होता है ऐसा नहीं है। दिस इज हैपेंड विथ एवरीवन, है ना? अब सभी के मैंने इंटरव्यू लिया आज, लेकिन सभी का हाल तो वही है। थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन हाल तो वही है। व्हाट इज द रीजन आप इंटरव्यू प्रिपेयर नहीं करते हो? इंटरव्यू प्रिपरेशन आप करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा कहीं पे भी। क्लियर, ओके, करण? थैंक यू सर। यस सर। यह ऑल द बेस्ट, अनुज।
Anuj. Yes. Yes, Anuj, tell me about yourself. Currently, I'm living in Mosri. I'm born and brought up there. I completed my graduation in Bachelor's in Computer Science, and simultaneously, I have completed my cloud computing certification course from King Institute. And currently, I'm pursuing my AWS DevOps from Arbor Academy. And I have also 8 months of experience of tech support. I was working in IBM as a queue manager in queue management team. Okay, so you have completed your cloud computing course in King. Then why you joined Arbor Academy? So that course was basically focused on networking hardware, and most of the part was of CCNA. AWS part was not completed as much. So you do the international certification of AWS? No. No. Okay. Anything about S3, you know? S3 stand for simple storage services. It is a AWS compute storage, which is used to store the files in buckets. We can store image files. What type of storage S3 is? Sorry, What type of storage S3 is? storage S3. S3 किस तरह का स्टोरेज है? Object storage? Yes, What are the different storage you have? the block storage. Yeah. Object storage और कौन सा है? Structured. What the name of it? How to access data in S3? How we can access data in S3? Through URL. Which URL? Object URL. Object URL, right? Any idea about pre-signed URL? Pre-shared URL? Not prepared for. Q? Why you are not prepared? Someone was told you about not to prepare for interview. घर वालों ने बताया था आपको प्रिपेयर नहीं करने के लिए या हार्बर में से किसी ने बताया प्रिपेयर मत रहो. Okay, can you tell me about blue green deployment strategy? It is we can say it is we create new server in which we use which we 80% traffic is sent to the old server, and now 20 or some about percent traffic is sent to the new server. Okay, ठीक है. As far as EVS is concerned, what is throughput and IOPS? Cloud formation. ठीक है अनुज कुछ क्वेश्चन है मेरे लिए पूछना है आपको.
मैं पढ़ा है एक्चुअली बट आई कांट। वाई? वही मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं पढ़ा है तो आप रिकॉल क्यों नहीं कर पा रहे? अगर रिकॉल कर नहीं पा रहे हो तो क्या ऐसा रीजन है कि मैं कुछ ऐसा हूँ क्या मेरे सामने आप बोल नहीं सकते हो? कुछ डरावना इंसान हो फिर? सॉरी, आगे आके ब्लैंक करो। क्यों? यही तो प्रॉब्लम है, यही तो हमको निकालना है ना प्रॉब्लम है। ठीक है, सो विद इन 15 days यू विल हैव वन मोर इंटरव्यू, और उस इंटरव्यू में मैं चाहूंगा कि आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो। अगर नहीं होता है तो फिर यार इस तरह से हमारा किसी का सिलेक्शन नहीं हो सकता। ओके, द वे यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन, आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो सकता है ना। कोई कुछ भी बोल दे, हम ये एक्सपीरियंस लगा के जाएंगे, वो एक्सपीरियंस, जितना आप एक्सपीरियंस लगा के जाओगे उतना आपसे एक्सपेक्टेशन भी तो बढ़ेगा ना। ओके, सेंड गणेश। यस, yes Ganesh, have a seat. Yes Ganesh, tell me about yourself. Sir, I am Ganesh Kapse. I am pursuing Master in Computer Science from Joy Patel College, Pune. I have done my schooling from Poddar International School, Lapur, and I have 9 months of experience as a system engineer in law and information technology. So currently you are working. So Now, why? project was completed and forceful resignation was given. Okay. What is EC2? Uh, Most simple question I ask you. What are different pricing options in EC2? What is S3? S3 is a storage service in AWS where we can create buckets and store up to 5 TB data. Can you example the bucket name? We can manually give it name. What name you will give for creating bucket? Suppose your name is Ganesh. Can you create a bucket with name Ganesh? Yes. Okay. Can you use S3 as your hard disk to EC2 instance? Suppose you are saying yes. So what question I will ask you? है ना Ganesh? It's very difficult. What is version in S3? Versioning in S3 is when we update the version of the bucket, then the current means updated one the bucket files we access. ठीक है Ganesh. You want to ask any question? No, sir. Okay, thank you. Hello guys. Yes, sir. अपना अपना परफॉर्मेंस सबको पता चला है। Yes, और sir. एक चीज बताओ क्या आपको, इसमें ना सब लोग अपना अपना स्पीकर ऑन करो। इसमें हंसने की कोई चीज नहीं है, इसमें थोड़ा सा शर्म आना चाहिए हमको, है ना। थोड़ा सा बुरा लगना चाहिए हमको, सो दैट वी शुड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू, राइट? यस सर। है ना। इसमें किसी का इंटरव्यू, जहां तक मेरा कहना है, अप टू मार्क मुझे कोई भी नहीं लगा, है ना। थोड़ा सा किसी का अच्छा हो सकता है, बट अप टू मार्क कोई भी नहीं है। तो होप यू ऑल प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट इंटरव्यू, और मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 15 days में आपका उसमें AWS भी रहेगा और DevOps से जो भी पोर्शन हुआ रहेगा वो भी रहेगा। क्लियर? और इस चीज को देखो, ये क्या है, आपको क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं था। ओके, आपको आपका लेवल दिखाने के लिए बेसिकली बोल सकता हूं मैं, हाँ, क्योंकि फिर लेकिन उसको ना पॉजिटिव वे में लेना है आपको। सो बेसिकली व्हाट यू विल डू,
For next interview, we will prepare hard and appear for interview. Okay? Yes, sir. Chalo, all the best. Yes, sir. Thank you. Yeah. Thank you, sir.